Welcome back to Shaikhain, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saif. ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा बड़ा स्पेशल शो है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है, a young director from famous industrialist family of Pakistan, जनाब Malik Saifullah Khan Noon. Assalamu alaikum, sir, and welcome to the show. Walaikum Assalam ji, thank you so much for having me on your show. It's an honor and I'm looking forward to it. इस प्लेयर जी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यू आर बिजी डायरेक्टर। बड़ा एक परसेप्शन है कि जो सरमायाकार हैं, तो जो सरमायाकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे जो है शायद पढ़े लिखे नहीं। तो ये पढ़े लिखे होते हैं, वाजिबी तालीम बाहर जाकर करते हैं। When I met Mr. Saifullah, ये हमारे एक डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे एक सेशन में थे। आई वाज अ ट्रेनर ओवर देयर। तो एसएससी का अप्रूव्ड डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो when I met him, तो वहां से मेरी पता चला कि he is seeking that certification, being a certified director, जो कि SCCP की requirement है। It is graduation from Royal Agricultural University England, 3 years program। और अब देखिए इसकी रेलेवेंसी कितनी खबर है गुजरात के ही, बिकॉज फ्रॉम द शुगर इंडस्ट्री, ये एग्जैक्टली रिलेटेड क्वालिफिकेशन पे थी। उससे पहले इन्होंने क्या किया, क्वालिफिकेशन पे क्या क्या काम किए हैं, कि मैं इनसे कहता हूँ कि जनाब में सैफुल्लाह, प्लीज डू लेट अस नो आपकी क्वालिफिकेशन का अब तक का सफर क्या है। ओवर टू यू मिस्टर सैफ जी। सो इधर मेरी एजुकेशन शुरू इधर लाहौर में ही हुई थी जी, लाहौर अमेरिकन स्कूल में। वहाँ से ये जो 15 आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल इन इंग्लैंड। उधर 2 साल मैंने अपने ए लेवल्स किए। दैट वाज अ पॉपुलर स्कूल फॉर स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन बाय द नेम ऑफ मिलफील्ड। उसमें तकरीबन 2000 बच्चा पढ़ता था जी। तो काफी इंटरनेशनल स्कूल बॉडी होती थी उधर। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट बिजनेस बैकग्राउंड्स, different cultural backgrounds, to be able to experience other people's culture, other people's traditions, their values. I think it was a good period in my life to be over there and learn about different people like that. From there, तो आपका बड़ा एक्सपोजर होता है कि आपको इंटरनेशनलाइजेशन आपकी वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, at a young age especially। मेरा एक got a twin brother as well, तो हम साथ साथ गए थे जी। So वो भी I think it was plus point for the two of us to be together। उधर से मैं गया, उधर से मैंने 2 इंटर्नशिप्स भी की। इधर पाकिस्तान में भी इंटर्नशिप्स की। एक तो इधर ऑटिस्टिक स्कूल्स पे भी, मीनिंग सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल इंटर्नशिप्स उस किस्म की भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में की। उधर से जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो तब उनने यूके एक सिस्टम होते हैं, उधर से आप अप्लाई करती हैं यूनिवर्सिटीज को विद इन द यूके। तो व्हेन आई वाज लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज, हमारी वैसे तो फैमिली बैकग्राउंड इज इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। आवर फर्स्ट इंडस्ट्री वाज सेट अप इन द ईयर 1911, बट जो भी मेन इंडस्ट्रीज हमने लगाई हैं वो ज़्यादातर जो उस इलाके के, हम वैसे भलवाल के रहने वाले हैं, तो उधर जो इलाके के क्रॉप्स उस जमाने में लगती थी। फॉर एग्जांपल इन 1911 कॉटन वाज अ वेरी फेमस पॉपुलर क्रॉप इन दैट रीजन। तो 1918 की बात कर रहे हैं आप? यू आर टॉकिंग 1918 में आपकी फैमिली 1911 से योर फैमिली आज, मतलब यू आर द थर्ड जनरेशन ऑफ दिस फैमिली। नहीं, 1911 में तो देयर वाज मीनिंग मच मोर देन 3 जनरेशंस अगो। वो भी अभी तक कंपनी लिस्टेड है, लेकिन वो कंपनी मीनिंग जिनिंग प्लांट थी माशाल्लाह। तो वो पहली हमने कंपनी लगाई थी। उसके बाद ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफरेंट क्रॉप पॉपुलैरिटी वो चेंज होता रहा, तो उधर अब कॉटन कम लगते हैं। उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज भी लगी उधर। एक हमने, शायद आपने सुना है, नूरपुर के नाम से एक डेयरी की कंपनी भी है, नूरपुर बटर, नूरपुर मिल्क। वो भी हमारी फैमिली भी ने उधर लगाई थी। ये भी उधर फार्मर्स का डिमांड देख के आगे ये शुगर, क्योंकि शुगर केन भी उधर काफी ज्यादा है। उसके बाद एक after that we also branched out into different things such as एक हमने cement plant, pioneer cement के नाम से my elders had put up। Then there's also a bottling plant they put up and such। There's a trading company also। तो
आजकल तो मैं इधर ही नून शुगर में काम कर रहा हूँ. We no longer own some of the businesses, but जिम्मेदार Jinning, the one from 1911, very interestingly, is still up and running, although it's not functional. But having a business from the year 1911, possibly one of the oldest ones. It's partially listed, not fully listed on the stock exchange, but it's quite an interesting 1911 means it is almost 110 years from now. Over 110 years. Over 110. माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है. आपने एज ए डायरेक्टरशिप ज्वाइन की 2018 में नून शुगर मिल की सर. Being a qualified person, being a qualified and foreign qualified expertise qualification लेकर आए हैं, what do you feel, what will be having the edge over the management जो कि आपकी qualification and जो which you are bringing to the industry, उसके क्या benefit होंगे industry? Well, first of all, I'd like to say that the management itself is very learned and experienced. So I feel like I can always learn from them, especially my elders. And even people working within the organization, they're all very capable and smart. So I learned about different cultivation methods, new machinery abroad to plant sugarcane, to harvest sugarcane, different economies of scale, how those machineries will be effective on smaller land holdings. बाहर तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं compared to where our sugar mill is located. On top of that, we've got a distillery that runs along with the sugar mill. तो वो भी साथ ethanol हम बेचते हैं. तो वो जी जब बात करनी हो किसी कोई आए खरीदने के लिए बाहर से स्पेशली अगर आए, I feel like my exposure to the English world and going to boarding school over there and stuff has given me a certain edge over. So Saifullah sir, अभी तक आपका जो career है, it is on the marketing sales side or on the technical side? Well, I'd say it's on both. It definitely helps on the marketing and sales side, in the technical side as well. When, for example, आजकल this is one of the things that we've been taking very seriously, especially since I've been back, was meaning improving our machinery at the plant, bringing the machinery much more up to date. Currently, we're allowed by the government to crush 12,000 tons of sugarcane per day. We've been averaging about in the higher 9,000s, close to 10,000 tons per day. So, meaning we should be crushing 12,000. We should have the machinery. We should be improving our machinery for all of this stuff. So, meaning a machinery पे focus कर रहे हैं कि वो up to date efficient machinery ताकि हमारी mill भी efficient बन जाए. जैसे आप देखते हैं इधर sugar industry जो होती है, it's quite heavily regulated. So the best way moving forward, in my opinion, is to be as highly efficient as you can, and then to do everything the best way you can. So that includes having up-to-date machinery. हमारे जो कहीं machinery, some of the machinery hasn't been replaced since the mill was set up in the 1960s. So 1960s की machinery है. कोई machinery तब की भी है. तो जी वो भी ऐसे कई चीजें meaning periodic आपकी BMR होती है, maintenance repair, adding new machinery, stuff like that. So वो हम कर रहे हैं, and inshallah that's something that I've also been helping with. That's very good, sir. ये बताएं आपने मुझे Saifullah आपने बताया था कि you are very good in sports. पोलो पे आप हैं, फिर उसके बाद रग्बी में भी आपने अपनी अचीवमेंट थी. Please, would you like to share it with our viewers? So I started. So our family, my whole family, बल्कि father's side has been involved in polo in Pakistan. We've got a lot of high goal players who've represented the country from my family. Mashallah, mashallah. Young age, I was playing polo. इधर लाहौर polo club में ज़्यादातर खेलता था. फिर when I had the opportunity to go abroad, I managed to play over there quite a lot. Me and my brother both play polo. So then we even played in the under-18 team, Pakistan versus England. वो भी हमने जी 2 बार I've represented Pakistan against England in polo. So apart from that, in 2018, I was the youngest person to participate. There's a horse race, जो कि 1000 किलोमीटर distance है उस horse race का, और 10 दिन लगते हैं complete करने में. 1000 किलोमीटर distance है, 10 दिन लगते हैं, और उसका ट्रैक कहाँ से कहाँ तक ट्रैक है सर?
उसका ट्रैक कहाँ से है? ट्रैक कोई नहीं बना होता, विल्डरनेस में जा रहे होते हैं जी। साथ आपके पास एक जीपीएस होते हैं एंड द हॉर्सेस दैट यू राइडिंग आर सेमी वाइल्ड एज वेल। ये मंगोलिया में होते हैं, काफी मशहूर रेस है। इट्स आल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रेस। कई लोग गिर जाते हैं, हड्डियां शड्डियां टूटती हैं। 40 कोई कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनमें से about 20-25 finished, so a lot of people have to pull out. So I was very proud that at the age of 18 or 19, it was in August 2018. So I was 19 years old. I just turned 19 years old when I went, and I was the youngest participant, and I managed to finish. And I was the first youngest participant and youngest Pakistani as well. So I was the first Pakistani to do this. अब मेरे ख्याल से और भी कहीं गए होंगे. But at that time, that was a very proud moment in life. And apart from that, I've been a keen sportsman my whole life. I feel like sports teaches you a great deal in teamwork and learning to work with others, learning to accept where you're not as strong as your teammates and where your teammates can help you, and where you can help your teammates if they have certain weaknesses. So that definitely applies in the life you have at the office, because there's no point, meaning over here especially, you have to work. आपको टीम के साथ काम करना होता है, अकेले तो बिल्कुल सही। आपको टीम के साथ काम करना होता है। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द टीम, और यू हैव टू बी गुड टीम प्लेयर और गुड टीम कैप्टन समवेयर। अच्छा, ऐसा साहब ये बताइए कि माशाल्लाह अब तक आपकी लर्निंग जो है एज ए डायरेक्टर भी है आप है, और प्लस आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी है, और जैसे आपको बार बार आपके यहाँ टीम एंड लर्निंग एंड टीम प्लेयर की बात आपकी हो रही है, तो माशाल्लाह अब तक आप एज योर टीम एज ए डायरेक्टर, आपकी टीम आई होप 3-4 सालों में आपने ठीक ठाक बना ली, and good, you are enjoying good office activities. I was very lucky. जो मैं आया था, there was already a very strong team, and value, meaning our workplace is like at the office, everybody is like family. So there was a very strong team already developed, and I managed to fit in. There were some people, for example, meaning at university, obviously agribusiness का तो सीखा था, but in terms of international sales and stuff, when you get into it, each industry has its own practices that you must learn. So I was very lucky. A couple of the senior management within our company also took me under their wings at the start. I mean, learning about ethanol sales, sugar sales, manufacturing, where we're getting the sugar cane from. So alhamdulillah, yes, we've got a great team over here. The one that we're very माशाल्लाह अच्छी टीम मिल जाना बड़ी बात है जी। आपके जितने मर्जी अच्छे प्लान है एज एंटरप्रेन्योर, but if you don't have good team, you cannot execute it. Yes, I fully agree. जैसे डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपने ये चीजें बातें सीखी हैं। अच्छा सवाल ये बताएंगे, पाकिस्तानी शुगर इंडस्ट्री की अपनी डायनामिक्स है। कभी हम सुनते हैं एकदम शुगर एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी, कभी सुनते हैं फिर वो इंपोर्ट होनी शुरू हो जाती है। अचानक ये क्या होता है? या डिमांड एंड सप्लाई है, एक तो समझ आती है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन डोंट बी प्लान। ये थोड़ा सा बता दीजिए विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स। सो जस्ट एक शुगर इंडस्ट्री की अपनी क्या इसमें है, इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं? शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, आई फील लाइक it isn't fairly the way people describe it isn't completely fair. The sugar industry is very heavily regulated. Yes, it is heavily regulated. There's a price floor, meaning there's a minimum price that you have to buy the sugarcane from. Then there's a maximum price you can sell it at. So the industry is very, very sort of, it's not given much room to grow or make profits in certain ways. So the one thing that does differ from company to company is the recovery. Being in the central Punjab, Sargodha mein, Bhagwal mein hamari mill hai, so udhar the recovery is not as great as in probably southern Punjab. Okay. But when you calculate the costs and everything, that does be a negative impact for us. So as I said before, we're trying to get our machinery jitni achhi nahi ho sake, ताकि हमारी efficiency ज़्यादा हो। 12,000 tons crushing capacity हमारी daily achievable हो जाएगी, ताकि उस level पे तो meaning आपकी economies of scales पे फिर आ जाती हैं, then you can still afford a couple of losses. Your profit margins will be able to increase slightly. Apart from that, I feel like the industry is
unfairly sometimes examined, but we're lucky as within our organization, Noon Sugar Mills, that years ago we branched out and we set up an ethanol distillery. So luckily वो भी माशाल्लाह साथ साथ अब चलती आप एक सर्टिफाइड डायरेक्टर भी हैं, एक तो माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन में एक और माशाल्लाह का स्टार, तो ये सर्टिफाइड डायरेक्टर एसएससीपी जैसे क्वालिफिकेशन है, तो और अब आफ्टर लर्निंग दैट कोर्स ऑफ बड़ा 8 दिन का 40 आवर्स का बड़ा कोर्स होता है, मैनेजमेंट का कोर्स है, तो क्या आप समझते हैं कि आफ्टर विद योर ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड फैमिली बैकग्राउंड ये सब कुछ मिला के आप इस इंडस्ट्री के बारे में आपके ध्यान में क्या आता है कि व्हाट वुड लाइक टू डू for the improvement of the industry, for the country, so that you can better contribute towards the industry as well as the society of Pakistan? Well, first of all, as I said at the start, जो भी हमारी families ने businesses ये लगाई थी हमारे, we have very strong sense of belonging to where we're from. Mashallah. In Bharwal. That's great thing. That's great thing. In terms of what differences I'd like to bring within this organization, wouldn't be specifically for someone at my level. It would be more so for the farmers. Meaning क्या वो अपने how can they adapt their farming techniques, कौन सी वो नई मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी yield कैसे बेहतर आ सकती है, उनके लिए कैसे ज़्यादा profitability हो सकती है, उनके लिए जिंदगी आसान कैसे हो सकती है. तो and then also as well as that, I feel like we have very strong responsibility to our earth as well, क्योंकि जितनी इधर होती है crop burning, pollution, unfortunately Pakistan is one of the countries that gets most affected by global warming. So wo bhi in terms of water wastage, sugarcane is very high, so it demands a lot of water, sugarcane as a crop. So meaning not drip irrigation, but more effective ways of watering your crop and maybe helping the farmers understand that there are new, more cost efficient and better better techniques with better results for farming than traditional methods that people have been using. माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका विजन है. छोटे से हमारे एक इंटरव्यू में आपने जो कीवर्ड्स बोले हैं सैफुल्लाह नून, excellent thing. You did talk about the farmers, you did talk about the yield maximization, cost efficiency, and farmers benefits of the farmers, and waste minimization of the waste and the pollution, and all these things you are concerned as a young director. Maximization of profit तो हर कोई चाहेगा, लेकिन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पे भी काम करने की जरूरत है, यील्ड को बेहतर करने की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मशीनरी के थ्रू अपनी कॉस्ट कट करने की जरूरत है. दैट्स एक्सीलेंट थिंग. एवरीवन वुड लाइक कि मेरी प्राइस को बढ़ा दें ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए. You are talking about minimization of the cost. Through various methods, various means are there. अभी एक छोटे से इंटरव्यू में आपने 6, 7, 8 जो मेरे एरिया बताए हैं. I am very much happy on that. I am really hopeful. आपके लेवल के डायरेक्टर्स माशाल्लाह जो यंग डायरेक्टर हैं, बिजनेस में फैमिली के बाहर से पढ़कर आ रहे हैं या कंट्री से पढ़कर आ रहे हैं, और जो विजन लेकर आ रहे हैं कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट नॉट बाय इंक्रीजिंग द प्राइस. बाय नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल put our management energies towards those areas जहाँ पे cost cutting की जा सकती है, farmers को बेहतर फायदा किया जा सकता है, wastage को कम की जा सकती है, modernization of industry, machinery, and optimal utilization of the resources. So I am very happy and hopeful कि आप जैसे ऐसे डायरेक्टर और ऐसी मैनेजमेंट जब जो आती रहेगी और वो माशाल्लाह अपनी हमारी इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर परफॉर्म. So with all these words, would you like to add something which you have missed so far so that we conclude this session, Saifullah? It was on, and I'd just like to say in terms of the economic situation currently within the country as well, it's been tough on the sugar sector, especially because of, for example, आप जो काइबोर से पहले 9% पे लेते थे, अब मेरे ख्याल से शायद 15% पे लेते हैं. Foreign cash reserves at the moment, I think just in general, the foreign cash reserves in the country are at low. The dollar is at a high. So especially these all industries in Pakistan, a lot of them are import based as well. At the end, they may export, but a lot of them do import raw materials. So for them, with this raising dollar, it's a tough market. So especially even sugar ke liye, meaning for example, you get a lot of cash finance to pay your farmers back to get the sugar cane. आपका पूरा cash flow cycle चलते हैं.
तो ऐसा सैफुल्लाह नून हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इंडस्ट्री है या मॉडर्नाइजेशन टेक्निक से और यील्ड की मैक्सिमाइजेशन से अच्छी आउटपुट से फार्मर्स के पास जाके अच्छी ग्रोथ ली जाए, ये ऐसा करने से क्या पाकिस्तान कभी डॉलर कमा सकता है एक्सपोर्ट करके शुगर को? ऐसा एक फीचर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बन सकता है? The problem with Pakistan is we've got a very growing population. हमारी I think average age is 23 years old, which is extremely young. तो वो एक rising demand तो है, especially these commodities. But I think with the more sort of responsible farming methods, जी जरूर हो सकता है आपकी रिकवरी भी ऊपर सुक्रोज रिकवरी जो देखी जाती है शुगर केन में सही, बिल्कुल सही, जरूर आपकी इम्प्रूव हो सकती है और साथ साथ ये बाकी भी चीजें इन ट्रिकल डाउन इफेक्ट you can one day hope to achieve a very good environment for this industry inshallah. So hopeful mashallah. But I also like to add that due to this, for example, I think a lot of these worldwide right now due to Ukraine, Russia जो अभी उधर conflict चल रहे हैं, there's been for example shortage in wheat stock उधर अफ्रीका में काफी hit हुए. Similarly, fuel prices have gone up globally. So the cost of transportation of everything, meaning article petrol prices are also petrol, diesel, cost of oil, transportation is also very high. So to keep a proper import business or export business flourishing is a tough job in this It's a challenge. And then working with all the stakeholders to make their systems as efficient and strong in the future. We will get through inshallah, and it will be inshallah. Young director, very young director, the age of 22, mashallah, have very good ideas about, very good thoughts about that. I was really very eye opening है कि आपको इंटरव्यू करना, कि जिस तरीके से आपके व्यूज नजर आए हैं, जिस तरीके से आपका विजन है कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री को लेकर चले और इसका पूरा पॉजिटिव इफेक्ट इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में होगा. Thank you very much Saifullah for joining us. I'd also like to